morning. Today we are going to discuss exercise 6D of Element Mathematics book. Before we discuss, let us first discuss all the concepts related to 6D. So आज हमें mainly दीटा important theorem और distribution देखिवा. First is your binomial theorem and binomial distribution. Then हमें आसीबा random distribution. So प्रथमे हमें देखिबा what is binomial theorem and a question based on binomial theorem. So प्रथमे हमें देखिबा binomial theorem. See, binomial theorem is symbolically represented by P R success is equal to NCR small p. See, it is capital P and it is small p. What is the meaning of capital P? Means probability. This P means probability and the small p means probability of success. Don't get confused. I'll explain each and everything slowly. सब गुड़ा जिनस धीरे धीरे बुझेबी. एटा बुझाटा बहुत इंपोर्टेंट. सो PR success is equal to NCR P to the power R into Q to the power N minus R. एटा हैला तमरो binomial theorem of probability. Next टाइम आसीबा P माने कोन, big P माने कोन, big P means probability. N माने कोन, N माने होची number of trials. गोटे जिनस मन रखो जेतेबेले भी तमरो बाइनोमियल थ्योरम आसीबो किंबा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आसीबो सबु केस रे मल्टीपल ट्रायल्स हेथिबो. मल्टीपल ट्रायल्स मींस कॉइन थोरे नै 10 थरो कॉइन फिंगाला. हाउ मेनी टाइम्स यू विल गेट 6 हेड्स. सपोज 10 कॉइन्स आर टॉस्ड और गोटे कॉइन तमे 10 थरो टॉस कलो. से टाइप रो मल्टीपल ट्रायल्स. गोटे डाइस को तमे 6 टाइम्स थ्रो कलो. सब बेले मन रख जदि बाइनोमियल थ्योरम आसिला मीन्स मल्टीपल ट्रायल्स हेथिबो. सो n is the number of trials, r is the number of success, r is the number of success. क्वेश्चन डिस्कशन कले एटा पूरा बुझा पड़बे. देन आसी गेला p is the probability of success in one trial. गोटे ट्रायल रे probability of success केते. मल्टीपल ट्रायल्स होची तो गोटे ट्रायल रे probability of success केते. Then q is number of probability of failure in one trial. So q is probability of failure in one trial. ताले obviously कोन होबो? Q is equal to 1 minus P. Q is failure. Failure is equal to 1 minus success. Now, बर्तमान आमे जदि गोटे क्वेश्चन डिस्कशन करिबा ताहाले आमे क्लियरली बुझी परिबा. सो क्वेश्चन डिस्कशन करिबा एटा होची क्वेश्चन नंबर 10. बुक रो मन रखो क्वेश्चन नंबर 10. मु धीरे धीरे 1 to 10 सब गुडा क्वेश्चन कवर करिवि. सो प्रथमे जेहेतु it is related to concept, question number 10 similar type of question number 10 रे तमरो similar question अछि. त देखिबा कोन question अछि. a fair coin is tossed 6 times. fair coin is tossed how many times? 6 times. 6 थरो तमे गोटे coin toss कलो. find the probability of getting number 1 हला exactly 5 heads. Number 2 at least 5 heads.
and number 3 at most 5 heads. So a question रो आंसर हमें theorem of binomial theorem द्वारा हमें सॉल्व करिया। ताले देखो प्रथम binomial theorem द्वारा सॉल्व करिया गले प्रथम जानिया पड़ियो what is n, what is r and what is p and what is q. Okay, so प्रथम देखिया what is n. n माने कौन? n माने होची number of trials. केते होची number of trials? 6. So equal to 6. n होची number of trials 6. Then next हमें आसीबा find the probability of getting question number 1 exactly 5 heads. Means success होची getting a head. हला ताले r means number of success r रो value केते r रो value हला 5. Value of r is 5. Next p होची probability of success in one trial गोटे ट्रायल रे probability of success केते तमे जदी हेड गोटे coin toss करो what is the probability of getting a head? It is 1/2. So p is equal to 1/2. Then asla q probability of failure in one trial. q होची probability of failure in one trial. q is equal to 1 minus p. So 1 minus 1/2 that is equal to 1/2. बर्तमान हमें सबुडा वैल्यू पाई गेले. So हमें लिखि परिबा probability of 5 success कहेंगे r रो वैल्यू 5. Probability of 5 success is equal to NCR. Means n रो वैल्यू कहते हैं 6 C5 6C5 NCR P कहते P होची 1/2. So 1/2 to the power 1/2 to the power r रो वैल्यू कहते r रो वैल्यू होला 5. So 1/2 to the power 5 into q रो वैल्यू कहते q रो वैल्यू भी 1/2 to the power n minus r n रो वैल्यू होची 6 r रो वैल्यू होची 5. So it is to the power 1. So हमें already जानचे 6c5 रो वैल्यू होची 6 divided by 6c5 रो वैल्यू 6 divided by it has 2 to the power 5 or 2 to the power 1 2 to the power 6 2 to the power 6. So ମୁଁ ଏଠି लिखि परिबी 2 to the power 6. So answer आसी गला 3 divided by 2 to the power 5 or 3/32. 2 cancel ହେଇଯିବ 3/2 to the power 5. So 3/32. This is very simple. क्वेश्चन रे केवल तमे जानियार अछि p कोन q कोन n कोन और r कोन. सो बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा. एटा हला कोन क्वेश्चन नंबर 1 रा हम आंसर कर देले एग्जैक्टली 5 हेड्स एगला. देन हमें देखिबा at most or at least 5 heads. At least means अति कम रे 5 means कोन 5 किंबा ताडू अधिक 5 or more than अति कम रे 5टा means 5टा ही पारे और 6टा ही पारे. So bit 2 रो आंसर हबो let it be probability of E, let the event is E, is equal to probability of 5 success plus probability of 6 success means getting head.
So probability of 5 success again ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଆମର n ର value କେତେ n ର value ଆମର 6 tries होची small p ର value केते small p ର value होची 1/2 and probability of getting the height is 1/2 small q ର value केते small q ର value होची again 1/2 probability of failure r ର value कोटी 5 होची कोटी 6 होची so probability of 5 success plus probability of 6 success এটা হচ্ছে probability of getting at least 5 hits so 6 c5 p to the power r p माने 1/2 to the power 5 q माने 1/2 to the power 1 plus it होची r value 6 so 6 c6 then p value 1/2 to the power 6 1/2 to the power 0 6 minus 6 एटा रहेगा आपको सॉल्व करे तब आसीबो bit 2 रो आंसर then 3 at most 5 heads रो मीनिंग होची 5 रो अधिक हले हबनी माने 6 टा हेड आसीबा को हबनी 6 टा हेड आसीबनी अति अधिक रे 5 means एक होई परियो दी शून्य होई परियो 0 होई परियो 1 होई परियो 2 होई परियो 3 होई परियो 4 होई परियो 5 होई परियो किंतु 6 हबन सो इठी हमें 1 minus 6 भी करि परिबा 1 minus एमती भी करि परिबा नंबर 3 रो 1 minus 6c6 1/2 to the power 6 into 1/2 to the power 0 एमती कोले भी हबो और इक्वल हे जबो 6 माने 0 हेड और probability of 0 head probability of 1 head probability of 2 head probability of 3 head probability of 4 head and probability of 5 head ताले 0 हेड टा को हमें बाइनोमियल थ्योरम जदी अप्लाई करिया केमथि हबो 0 हेड टा n c0 n माने केते 6c0 1/2 to the power 0 into 1/2 to the power 6 plus 6c1 1/2 to the power 1 into 1/2 to the power 5 ये कंटिन्यूस हो सो either तमे 1 minus probability of getting 6 heads नहीं जा और तमे यदि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अनुसार गोटे गोटे ऐड करिवो ताले 0 head 1 head 2 head एमती कंटिन्यूस हो सो आर वैल्यू जहां भी आसीबो आर वैल्यू मध्य से आसीबो सो दिस इज ए क्वेश्चन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10 of your book exercise 6D okay next time concept को आसीबा next concept is binomial distribution so question number 2 exactly book ro question number 2 find the probability distribution of number of doublets find the probability distribution of number of doublets in 4 throws of a pair of dice एठी भी आसी गला मल्टीपल ट्रायल आसी गला केते थरो तमे थ्रो कलो कोन थ्रो कलो पेयर ऑफ डाइस दीटा लुडु गोटी थ्रो कलो केते थरो 4 थरो also find the mean and variance a mean कोन variance कोन एटा भी हमें देखियो से तो प्रथमे हमें देखियो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तापर देखियो हमें mean रो गोटे सिंपल फार्मूला n into p
मन रख सिंपल फार्मूला प्रोबेबिलिटी तमरो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रे मीन होची n into p देन वेरिएंस होची n into p into q मीन और वेरिएंस वेरी सिंपल सो फर्स्ट टाइम आसीबा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मन रख बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू is of two rows dita row आसी ताले प्रथम एठी हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करिवा सो प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस अच्छा r सक्सेस माने r टा कोन ही पारे r माने नंबर ऑफ सपोज हमें बाहर करिवा प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ डबलेट्स नंबर ऑफ डबलेट्स तमे चारि थरो थ्रो करछो हला r इज इक्वल टू 0 हे पारे r इज इक्वल टू 1 हे पारे r इज इक्वल टू 2 हे पारे r इज इक्वल टू 3 हे पारे r इज इक्वल टू 4 हे पारे चारि थरो तमे जदी थ्रो करछो दीटा डाइस नै गिरी चार थर जाको 0 आसी पारे डबलेट्स 1 आसी पारे 2 आसी पारे 3 आसी पारे और 4 आसी पारे सो r ए सो वैल्यू हे पारे r रो तो ये क्वेश्चन को हमें देखिबा एठी पचारचे हमरो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जीवा पूर्वरु हमें प्रोबेबिलिटी थ्योरम कोन कुछ देखिबा प्रोबेबिलिटी थ्योरम ने कहला प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस इज इक्वल टू ncr p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r तो देखो जदी ई क्वेश्चन को हमें कंसीडर करिवा r रो वैल्यू केते ही पारे 0 हे पारे 1 हे पारे 2 हे पारे 3 हे पारे और 4 हे पारे देयर कैन बी 0 डबलेट्स 1 डबलेट 2 डबलेट 3 डबलेट्स 4 डबलेट्स ताडो दे होई परियो काई ना हमें थ्रो के थर करछे चारि थर सो r रो वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस मींस r 0 हे पारे 1 हे पारे 2 हे पारे 3 हे पारे और 4 हे पारे सो हमरो जदी फॉर्मूला पकेवा n रो वैल्यू 4 cr 1 by 6 to the power r 1 by 6 माने probability of success कोन सक्सेस इज गेटिंग ए डबलेट दीटा डाइस तो मैं थ्रो करछो डबलेट आसीवार प्रोबेबिलिटी केते डबलेट आसीवार प्रोबेबिलिटी हला 6 by 36 डबलेट माने कोन 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 आउ 6 6 So 6 by 36, 1 by 6. So Q रो value होबो 1 minus 1 by 36, 1 minus 1 by 6 that is 5 by 6. So 4 CR 1 by 6 to the power R 5 by 6 to the power 4 minus R. एटा आगला हमरो फॉर्मूला. Now R रो value 0 to 4 होची से वैल्यू गुडा को तमे नै कि जदी गोटे टेबुलर फॉर्म रे रखि देलो दैट इज योर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेटा सिंबॉलिकली केमति लिखा जाय रिप्रेजेंट करा जाय फर्स्ट तमरो रो रे आसी जिवो x इज इक्वल टू स्मॉल x मींस रियल वैल्यू ऑफ r r ता हे परियो तमरो 0 हे परियो 1 2 3 4 हे परियो r रो वैल्यू गुडा पुट कर दले then it has your probability of r success or probability of x so r रो वैल्यू 0 1 2 3 और 4 है ना हमें वैल्यू पुट कर दवा सेकंड रो रे probability of x means r is equal to 0 पुट करियो it is simply पुट कर दवा 4 c 0 p माने कहते p माने 1 by 6 1 by 6 to the power 0 q माने कहते q माने 5 by 6 5 by 6 to the power 4 minus 0 that is equal to 4 then 4 c1 1 by 6 to the power 1 5 by 6 to the power 4 minus 1 that is 3 then 4 c2 1 by 6 to the power 2 then 5 by 6 to the power
4 minus 2 that is equal to 2. Then 4c3 1 by 6 to the power 3, 5 by 6 to the power 5 by 6 to the power 4 minus 3 that is equal to 1. Then last it is 4c4 1 by 6 to the power 4, 1 by 6 to the power 0. So simply हमें जदि r रो वैल्यू जहाँ जहाँ अच्छी ताकू नहीं कि जदि हमें फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू गुडा को पुट कर दबा सबुळे मन रखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रे दीटा रो आसीबो r रो प्रत्येक वैल्यू each and every value of r पाई प्रोबेबिलिटी बाहर करा so that is your binomial distribution. Then same question रे हमर पछारची mean और variance. अच्छा mean कोन mean फार्मूला दला n into p is mean. Variance कोन फार्मूला दला npq. So प्रथमे देखिया mean बाहर करिया n रो वैल्यू केते n रो वैल्यू इट होची 4 so mean 4 into p रो वैल्यू केते रो mean रो सी n रो वैल्यू माने केतरा ट्रायल हो चारटा ट्रायल n रो वैल्यू 4 देन p माने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p रो वैल्यू केते 1 by 6 so 1 by 6 is equal to 2 by 3 variance माने कौन n p q so variance is equal to n माने केते n माने 4 p माने केते 1 by 6 q माने केते 5 by 6 so आसीगल आईडी so it of 3 5 by 9 simple formula of किछ नहीं एटा टेबल भी दरकार नहीं n p q mean is equal to np and variance is equal to npq so एटा हेगला तमरो binomial distribution and calculating mean and variance of a binomial distribution. Okay, next concept हमें आसीबा random variable and random distribution. So देखिए what is a random variable and what is a random distribution. Okay, so random variable is a real valued function. Remember, it is a real valued function whose domain is sample space of a random experiment. Domain ta sample space है थी. Example देखिए clearly बुझा पड़िबो. Okay, so first हमें देखिवा उटा example नबा example देखिए exactly एटा कोन हमें जाने. Example, let a coin is tossed twice. गोटे कॉइन जदि हमें दी थर टॉस करे ताहले तार सैंपल स्पेस ता कोन हो सैंपल स्पेस हबो हेड हेड टेल टेल हेड टेल एंड टेल हेड हेड टेल एंड टेल हेड देन हमें नेक्स्ट एक्शन let x is random variable of getting head suppose capital X होची random variable of getting head अच्छा हमें टॉस करूचे दुई थर ताहले कौन कौन है परिबो x है परिबो 0 हेड किछि भी हेड आसीबोनी गोटे हेड आसी परिबो आउ दीटा हेड आसी परिबो सो वैल्यू ऑफ the number of head can be 0 it can be 1 or it can be 2 आउ किछि परिबो सो ताको हमें जदि टेबुलर फॉर्म रे लिखिबा सेटा हे जिवा हमरो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन सो टेबुलर फॉर्म रे हमें लिखिबा कैपिटल X इक्वल टू xi माने it can be 0 it can be 1 it can be 2 now probability of xi अच्छा 0 हेड रो प्रोबेबिलिटी केते नो हेड एटा ही हो 1/4 1 हेड रो प्रोबेबिलिटी केते 1 हेड
एटा हेबो 2/4 2 हेड्स रो प्रोबेबिलिटी केते 2 हेड्स रो प्रोबेबिलिटी केते 1/4 so these are the values of x and these are the probabilities of xi आपको जदि देखो इट इज ए फंक्शन माने कोन ऑर्डर्ड पेयर एटा आसी गला 0 हले 1/4 1 हले 2/4 2 हले 1/4 आपको हमें कहले कोन डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन सो मन रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट पॉइंट तुमको मन रखियार अछि को पॉइंट ता सबटो इंपोर्टेंट पॉइंट हला it is a कहला sample space whose domain is sample space एटा होची डोमेन एटा होची sample space देखो सबले मन रखो probability summation of p xi is equal to 1 काइटा टोटल टा होची sample space टा सब जगह जदि तुम ऐड करिवो 1 आसीबो एटा ही सबटो इंपोर्टेंट पॉइंट ए पॉइंट टा को बेस करी करी तमरो क्वेश्चन नंबर 1 अछि और क्वेश्चन नंबर 4 अछि एक्सरसाइज रे हमें देखिया हमें आसीबा some questions based on random distribution so mo directly एठी करछि क्वेश्चन नंबर 1 and question number 8 of your exercise 1 and 8 it is based on random distribution so question number 1 question state which of the following probability distribution of a random variable x with reasons to your answer এটা দেখি আমরা x equal to x देखो x equal to केटोनेटी x i मध्य लिखिबे x equal to small x xi मध्य हम लिखि परिबा small x निया है so x equal to small x 0 1 2 3 4 एटा तारो डिस्ट्रीब्यूशन टा देला probability of x 0 हेले 0.1 1 हेले 0.2 2 हेले 0.3 3 हेले 0.4 4 हेले 0.1 so हमको से पचारछि which of the following probability distribution is a random variable of x अच्छा एटा ए जो probability distribution टा random distribution ना नहीं सेटा पचारछि सो random distribution रा हमर कोन गोटे कंडीशन देखले इंपोर्टेंट कंडीशन देखले हमें इंपोर्टेंट कंडीशन देखले समेशन ऑफ probability of xi is equal to 1 देखो xi नियो x नियो गोटे जिंस को बुक रे तमे xi पाइबो को बुक रे स्मॉल x पाइबो इक्वल टू 1 तो आर समेशन टा 1 हवार अछि 81 होउची की 0.3 0.6 1 आसेला एटी एला 1.1 so it is not a random distribution because summation of probability of small x is not equal to 1 simple then हम आसीबा अच्छा आरो अन्य जहां भी बिट्स अछि that is your assignment से तमे करो हिंट दे देली then question number 8 को आसीबा question number 8 a random variable x has following probability distribution हला random variable x रो डिस्ट्रीब्यूशन टा देला x कोन x इक्वल टू स्मॉल x टा 0 1 2 3 4 5 देखो x टा जेहेतु वेरी करूची सेति पई हमें ताको कहले वेरिएबल सेई वेरिएबल पई प्रोबेबिलिटी केते गोटे कॉलम रे रहला वेरिएबल आ गोटे कॉलम रे रहला तमरो प्रोबेबिलिटी केते आसला 0 हला r दला 2r दला 3r दला 4r दला 3r आउ r ताले कोन पचारछि डिटरमाइन वैल्यू ऑफ r देखो इट ऑलरेडी इट इज गिवन इट इज ए रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ताले
आर समेशन टा केते होतबो 1 आसतबो सो 3r 6r 9r 10r so 10r equal to 1 कहेंगे समेशन ऑफ pxi is equal to और समेशन ऑफ px लिखि दियो ए क्वेश्चन पे समेशन ऑफ px equal to 1 हबो डेफिनेटली हबो सो आको ऐड करले आसला हमरो 10r is equal to 1 so r is equal to 1 by 10 r रो वैल्यू हमरा आसी गला केते आसला 1 by 10 आसी गला देन हमें जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी ऑफ x less than r x less than r will कहले एटा x less than r माने हमें एमते लिख परिया समेशन ऑफ x equal to 0 to x equal to less than माने केते 3 0 to 3 समेशन नंबर of small x और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल x ताले केते आसीबो 0 प्लस r प्लस 2r प्लस 3r सो 0 हेला 1 by 10 प्लस 2 by 10 प्लस 1 by 10 2 by 10 3r माने 3 by 10 that is equal to 6 by 10 और equal to हम लिख परिबा 3 by 5 3 by 5 सिम्पली आउ दुटा क्वेश्चन अछि आउ दुटा बिट अछि 8 नंबर क्वेश्चन रो आउ दुटा बिट अछि दैट इज फॉर योर असाइनमेंट तमे सेटा निजे करू नेक्स्ट ओके नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3 and 4 I'll solve similar type of questions to number 3. 3 cards are drawn one after another with replacement. Find the probability distribution. Find the probability distribution of number of kings. Number of kings is the random variable. Calculate mean and variance. Okay. Now, how many cards you are drawing? You are drawing 3 cards. Okay. So, the probability of getting a king, it can be 1, it can be 0, it can be 1, it can be 2, and also it can be 3. So let us draw the table. Here it is x, capital X equal to small x. Here it is probability of x. So number of kings, it can be 0, 1, 2 and 3. So let us express it in the form of binomial theorem. Probability of r success equal to n CR p to the power r q to the power n minus r. So here what is p and what is q? When you draw a card, what is the probability of getting a king? It is p equal to, p means the probability of success in a single experiment or single track. It is 4 by 52, that is equal to 1 by 13. So Q is equal to
1 minus 1 by 13. So Q is equal to will be 12 by 13. P will be equal to 1 by 13. Q will be equal to 12 by 13. Now R. R, it can be 0, it can be 1, it can be 2, and it can be 3. So now let us write down NC0. Value of N we know. N equal to total, you draw 3 cards, so N is equal to 3. So here I can write 3C0. P means P is 1 by 13. 1 by 13 to the power 0 to 1 by 13 to the power 3 minus 0, that is equal to 12 by 13. 12 by 13. Q is equal to 12 by 13. 12 by 13 to the power 3. Then when x, or here you have taken r, when r is equal to 1, so it will be equal to 3C1 1 by 13 to the power 1, then 12 by 13 to the power 3 minus 1, that is equal to 2, then 3C2 1 by 13 to the power 2, 12 by 13 to the power 3 minus 2, 1, then 3C3 1 by 13 to the power 3, 12 by 13 to the power 0. So this is the distribution. Now again you have to calculate the mean and variance. Okay, mean is equal to NP. So what is the value of N? Value of N is 3 into what is the value of P? P is equal to 1 by 13. So 3 by 13. Mean हो गया. Then variance is equal to NPQ. So already NP, you have already calculated the value of NP, that is 3 by 13. 3 by 13. Then NPQ, the value of Q is 12 by 13 into 12 by 13. So it is 36 divided by 169. This is the binomial distribution and mean and variance. Then you will move to question number 4. Find the probability distribution of number of heads in 3 toss of a coin. See, 3 toss of a coin. See, we can take probability distribution, or we can take manually also. We can take binomial distribution, or we can calculate manually. See here, let us calculate manually. We have already applied, here we have applied binomial distribution. Let us go for manual calculation. So here the sample space is, you are tossing 3 coins. So it will be head, tail, head, tail, head, head, tail, head, tail, and tail, head. This is the sample space. Okay. So total there are 8 elements are there in the sample space. So number of heads. Now the number of heads, it can be from 0 to 3. Number of heads can be from 0 to 3. Okay. Now let us make the
probability distribution x equal to capital X equal to small x, and here probability of small x. So it can be 0, it can be 1 head, it can be 2 heads, it can be 3 heads. 0, 1, 2 and 3. No heads. What is the probability that there will be no head? It will be equal to 1 by 8. This one. This one. No heads. Then number 2, 1 head. Exactly 1 head. 1. Then 2. 3. It's 3 by 8. Then 2 heads. 2 heads. 1, 2, 3. 3 by 8. 3 by 8. 3 heads. This one. So it will be again 1 by 8. See here also, if you add this, you get 1. Remember, when probabilities of all the variables are added, it is equal to 1. So now this is the binomial distribution of 3 toss of a coin. The same thing by applying the binomial theorem also, you will get the same table. See, we can calculate manually, but when the number of observations or number of trials are more, when 4 trials are there, now it is very difficult to write 16 outcomes. So in that case, we take binomial theorem. We consider binomial theorem. Okay, so this is the first one, and the second one, it is your assignment. Second one, you solve it yourself by applying binomial theorem. And number 3, this is to some extent similar to question number 3, and you have to solve and find out the answer of question number 3. Next ଆସିବା ଆମେ question number 5, 6 and 7. आरो मु सॉल्व करबिनी, केवल तो मु हिंट देबी, तमे निजे सॉल्व करियो. Okay, let us read and understand question number 5. A biased coin where the head is twice as likely to occur a tail, tossed thrice. Find the probability distribution of number of heads. Okay. अच्छा देखो, most importantly, biased coins. Biased coin means 1 by 2 9. But an unbiased coin रे probability of getting a head is 1 by 2 and getting a tail is 1 by 2. So एठी किंतु तमरो p माने कोन probability of success hint होची एटा हे जीवो 2 by probability of getting a head in one throw is 2 by 3 हे जीवो it is 2 by 3 and probability of getting a tail is equal to 1 by 3. कहीं के एटा होची twice head दी थर आसला को tail आसीबो गोटे थर. Okay, the probability of getting a head is twice as likely to occur as tail. So एटा द्विगुण होची ना probability. Probability of getting a head is 2 by 3 और probability of getting a tail is 1 by 3. So हमें कहि परिबा जदि हमें distribution नबा p equal to 2 by 3 और q equal to हमर होबो 1 by 3. Then our probability distribution तो बाहर करिबो. Distribution means r रो वैल्यू केता हो, r होबो 0 1 2 कहीं तमे केते थर टॉस करछो tossed thrice. Tossed thrice.
So value of r equal to 0 1 2 3 and 1 2 and 3 अकवार बाइनोमियल एक्सप्रेशन करो टेबल करो 0 हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड पास देन हिंट है ना सेठी p और q होतला 1/2 1/2 एटी p रो वैल्यू हे जीवो 2/3 q रो वैल्यू होबो 1/3 सिंपल हिंट दिया है क्वेश्चन नंबर 6 रो हिंट होची क्वेश्चन नंबर 6 को ऐसा find the probability distribution of number of aces of question number 3 if cards drawn successively with replacement अच्छा गोटे जिनस मार्क करो क्वेश्चन नंबर 3 रो हम जो जिबा चारिटा कार्ड ड्रा करा होची आ तमे डिस्ट्रीब्यूशन बाहर करछो नंबर ऑफ एसेस सो एठी कोन कहला सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट होनी विदाउट रिप्लेसमेंट मींस आगुर हमें डिस्कशन करथिले कॉम्बिनेशन विदाउट रिप्लेसमेंट मींस कॉम्बिनेशन पड़ियो प्रोबेबिलिटी बाहर करा ताल देखो एठी हमरो जेमते डिस्ट्रीब्यूशन हम x = स्मॉल x लेखुचे सेटा कोन हे परियो सेटा 0 हे परियो 1 हे परियो 2 हे परियो 3 हे परियो और 4 हे परियो 0 मींस नो s 1s 2s 3s and 4s हेला चारटा कार्ड ड्रा करछो गोटे काय किछ भी कैनवास करे गोटे दीटा तीनटा चारटा एडा हमरो वेरिएबल देन हमें एठी आसलो कोन प्रोबेबिलिटी ऑफ x केते हो 0 रो केते हो सपोज गोटे फर्स्ट गोटे कार्ड ड्रा करो सो गोटे भी आसले तो चारटा कार्ड तमे ड्रा कलो गोटे भी सपोज आसले ताले 4 कार्ड्स तमे ड्रा कलो 4 कार्ड्स रु गोटे भी एका नै केतरा कार्ड तमे 4 बार करछो केतरा कार्ड 52 अच्छा गोटे भी एका नै कोन होबो 48 ट्रू है से चारटा बार थियो 48c4 डिवाइडेड बाय 52c4 52 रु चारटा बार करछो एटा होची सैंपल स्पेस एटा होची नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट देन से चारिटा रु गोटे एका मींस कोन हो 1 रो कोन हो 4c1 into 48c3 और तीनटा एका नु हो ताले 42 बार छी डिवाइडेड बाय 52c4 सेमते दीटा रो कोन होबो 4c2 into 48c2 divided by 52c4 a सेमते सो एटा हला तमरो वेरिएबल्स of x 0 1 2 3 4 एटा होची प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 x = 1 x = 2 x = 3 सो ए हिंट टा को नेकी तमे सॉल्व करो देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा फ्रॉम ए बॉक्स containing 52 balls of which 8 are defective 8 are defective अछि 4 balls are drawn ताले r कोन हो 0 to 4 balls are चारटा ड्रॉ करछो तमे सक्सेसिवली वन आफ्टर अनदर with replacement कर दो with replacement find the probability distribution number of defective balls ताले number of defective balls देखो एठी n = तमन हे गेला 4 number of defective balls कोन हे परिबो सेटा अच्छा x कोन x = स्मॉल x कोन हे परिबो 0 1 2 3 4 0 defective 1 defective 2 defective 3 defective and 4 defective अच्छा what is the probability of getting a defective ball p in a single draw रे केतरा बॉल डिफेक्टिव अछि हमरो चारटा डिफेक्टिव अछि 4 बाय चारटा बॉल डिफेक्टिव अछि आउट ऑफ केते 32
So probability of getting a defective bulb is 4 by 32, that is 1 by 8. 1 by 8. अच्छा Q not defective होगा 7 by 8. बर्तमान हमर कोन R is equal to 0 defective, 1 defective, 2 defective, 3 defective and 4 defective. हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके P जानिले Q जानिले R एटा 0 1 2 3 4. So apply binomial and get the distribution. Next हमें ए पर्यंत डिस्कशन कले क्वेश्चन नंबर 1 to 10 all the questions with appropriate hints. आउ किछि क्वेश्चन डायरेक्ट मते डिस्कशन कले. सो ए डिस्कशन रो तमे सब जा क्वेश्चन कर परिबो. आ गोटे क्वेश्चन रह जायछि दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. बर्तन हमें आसे क्वेश्चन नंबर 9 कोन पूछ दे. फाइंड द मीन एंड वेरिएंस of the number obtained on throw of an unbiased coin. अच्छा coin रे तो नंबर आसियो ने coin रे head आसियो नॉट tail आसियो. Okay, in when you toss a coin you will get either head or tail. So here the probability of the event is 0. You will not get anything. ठीक अछि. So there cannot be any distribution, so there we cannot calculate mean and variance when a coin is tossed, because in coin either we are getting head or you are getting tail.